Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself from Gujarat. Today we are going to see the last section of class 10th chemistry, which is acid, base and salt. The last thing that we will study in this video is that there in the last section or in last video we had not seen two compounds which are made from the either reactant or the product value that we get during the formation of NaCl or our common salt. There I told you guys so many other compounds are also found by either using any of the terms, such as I told you about HCl, I told you about calcium, I told you about so many terms regarding to different compounds which are formed either by chlorine, hydrogen. These all things that we discussed in last video means that we studied total soda. There I told you about overall soda, how many types of soda, which are the things that we have to study. Here we are going to see the two left topics, which are, first we will see bleaching powder. Bleaching powder. And one more term is left, which is our plaster of Paris. First we will see about bleaching powder. Actually guys, what do you mean by bleaching powder? We all had heard this word bleaching powder earlier in our daily livelihood. Yes guys, we had heard. Where? We mostly see that during the time of washing means what? Either washing of clothes or either washing of paper. Yeah guys, even paper is also washed for certain reason. There we used washing powder or bleaching powder. So how we can define it? Bleaching powder is a substance which is used for reducing the color of any particular substance. So we can write here definition: a substance used for washing colors of any particular substance. You have to add over there. So guys, ये तो पता चल गया कि bleaching powder का definition क्या होता है. The next thing is how is actually bleaching powder is formed. Means that the compound of bleaching powder को कहा क्या जाता है. Actually guys, in part 1, in chapter 1 I told you about two terms about Q-climb and slag-climb. आपको याद होगा कि Q-climb का मतलब क्या होता था and slag-climb का मतलब क्या होता था. Actually guys, by the help of Q-climb only, this compound or bleaching powder is formed. How? Let me tell you the proper sequence or the proper reaction or the proper chemical reaction which goes over here with the help of Q-climb guys. तो चलो मैं अभी आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ और chemical balance करके भी equation को आपको. So guys, finally we can see over here is that CaOH2. I told you in chapter 1 only, CaOH2 is known as slacked lime. याद है आपको guys, मैंने बताया था two types of limes are there, Q-climb and slacked lime. Even I told you about calcium carbonate. क्या था उसका यूज आपको याद रहना चाहिए guys, मैंने बता दिया. So there should not be any problem with you or any confusion with you guys. Now here we can see by the reactant of slacked lime with chlorine gas, we got one term which is calcium oxychloride. By the help of this calcium oxychloride, or we can say that calcium oxychloride is nothing but it is our bleaching powder guys. तो हमेशा याद रखना कि here we are using what? Here we are using Cl2. As I told you, Cl2 from where we are getting. Even guys, मैंने पूरा सोडा में आपको बता दिया है. Last video only I told you so many terms regarding to all these terms as we are using with the hydrogen, chlorine और HCl जो भी हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं वो सभी तो NaCl का कहीं ना कहीं कोरिलेशन है गाइस. और यही कारण है कि ये सभी कंपाउंड हमें एसिड, बेस एंड साल्ट में पढ़ने हैं गाइस. सो ये फाइनली क्लियर होगा कि CaOCl2 हमारा ये जो, इसे नाम क्या देंगे गाइस. देखो इसका नाम क्या, हम पहले इसे देख लेते हैं क्या ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है कि नहीं. सो हियर वी विल स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो चलो काउंट करते हैं. Ca 1 नो प्रॉब्लम. OH2 यानी H का 2 है, O का 2 है. चलो अब यहां से देखो तुम, अगर ऐसे चलते हैं तो लोग देखते हैं O का 1 यानी 2 तो भाई हो गया, ये बैलेंस है. H का 2 चलो भाई बैलेंस है Cl2 यानी ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है. अब देखते हैं इसका मैंने नाम बताया, इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अब ये लेफ्ट क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया वाटर. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा हो ये वाटर एक्चुअली जाता कहाँ है, वाटर का क्या होता है. तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो गाइस एक्चुअली यहाँ पे जो वाटर का हमें ये अवेलेबिलिटी मिल रहा है, ये वाटर मिल रहा है एक्चुअली ये आफ्टर इवापोरेशन के पास हमें डायरेक्ट CaOCl2 जो हमारा की कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यही हमें प्रोडक्ट मिलता है. तो गाइस इतना बात तो हो गई. दिस मच ऑल वी टॉक्ड अबाउट ब्लीचिंग पाउडर. Now we are going to see the properties regarding to bleaching powder. Then we will see certain uses regarding to bleaching powder, guys. And the last thing is certain somewhat complicated क्योंकि plaster of Paris थोड़ा सा difficult है.
लेकिन वो मैं आपको इजी कर दूंगा क्योंकि देयर वी विल अप्लाई certain shortcut tricks in order to make the reaction. So guys, finally we are discussing the properties. P stands for properties regarding to bleaching powder, guys. So before that, let me tell you certain thing is that bleaching powder is always made from chlorine. Always you have to remember that chlorine provides a basic strength, or we can say that the property of bleaching powder is totally given, or we can say that directly given by chlorine gas. So chlorine gas is always essential for the formation of CaOCl2. So guys, finally we are going to see the properties regarding to bleaching powder. तो चलो पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी याद रखना कि ये जो होते हैं उनका थोड़ा सा स्मेल जो होता है वो हमेशा क्लोरीन के स्मेल से मैच करता है. So we have to write here the smell of bleaching powder is same as that of the chlorine gas. सेकंड क्या है हमेशा गाइस? सेकंड देखो, सेकंड ब्लीचिंग पाउडर का सेकंड प्रॉपर्टी वो भी क्लोरीन से कहीं ना कहीं आपको मैं कोरिलेटेड करके दिखाता हूं गाइस. अब देखो ये कैसे होता है. एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जब वो जो है वो वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है गाइस. चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं गाइस. Suppose that we are having one beaker and we are trying to add or we are trying to dissolve the bleaching powder in a beaker. So finally we will get that कि ये पूरी तरह से dissolve हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि क्लोरीन गैस के बारे में आपको पता है कि क्लोरीन गैस is very very difficult to hold. Chlorine gas is so freely movable from one place to another. For this reason we are getting that when we are trying to mix at that time it get totally dissolved with water guys. एक चीज तो ये याद रखना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको मैं बताता हूं. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना? मोस्टली सॉल्यूबल बट नॉट ऑलवेज सॉल्यूबल. इतना याद रखो, मोस्टली सॉल्यूबल. लेकिन एक एक्सेप्शनल केस कहाँ होता है? देखो एक्चुअली एक एक्सेप्शनल केस ऐसा जनरेट हो जाता है जहां पे आप मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होता बल्कि वहां पे रेसिड्यू लेफ्ट हो जाता है. तो वो आपको क्लास 10 के टॉपिक में नहीं पढ़ना है, आपको हायर स्टडी के टॉपिक में मिलेगा. तो इतना मैं आपको डिटेल देता हूँ. अब इससे ज्यादा रिगार्डिंग टर्म आपको ब्लीचिंग पाउडर तो है ही नहीं. और एक चीज और गाइस देखो, एक्चुअली मैंने पहले बताया कि CaOCl2 is also known as bleaching powder, and here we can see that Cl2 is very very essential in the formation of bleaching powder, and during certain times Cl2 is removed by the process or by the involvement or by the action of another reaction where we are taking sulfuric acid. Do you know already sulfuric acid possesses the formula of H2SO4. So we react this one CaOCl2 plus H2SO4 and we perform one reaction over here, and during this reaction we get Cl2 as our product. तो चलो ये रिएक्शन क्या होता है? ये रिएक्शन हम लोग मोस्टली इस केस में अप्लाई करते हैं जब हमें Cl2 को वापस लेना रहता है. Cl2 का वापस क्यों लेना होगा ये आपके माइंड में आ रहा हो कि why we take off Cl2 from the compound. देखो एक्चुअली Cl2 का ही कारण है कि ये जो हमारा सब्सटेंस का जो कलर का चेंजमेंट देखने को मिलता है, यानी ये कलर को जिस कलर बना देते हैं वो Cl2 का मदद से ही होता है. तो इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स समटाइम्स Cl2 को बाहर निकालते हैं. देखो अब यहाँ पे ये वाला रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बस इतना करो कि जो मैं बोलते जाता हूँ उससे लिखते जाओ. हमें पता है कि Cl2 एक प्रोडक्ट मिलेगा, चलो इतना तो पता है कि Cl2 मिलेगा. अब हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें अपना दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस है, क्या हो सकता है बताओ. देखो गाइस जब भी ऐसा टाइम है मैं बार बार कहता हूँ कि यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस ओवर देयर. अब देखो कि कुछ हमें समझ में आ रहा है, एक तो हमें Cl2 मिल रहा है और कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे H2+ हो तो भाई यहाँ से वाटर भी मिल गया. अब देखो यहाँ से कुछ बचा है क्या? तो बचा है जो लिख दो फाइनली CaSO4 एंड CaSO4 इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट. अब एक गाइस एक बात और हमें आपको बताना है कि जहां पर हम लोग जानते हैं सल्फेट टर्म्स आता है वो साल्ट का फैमिली के बिलोंग करते हैं. तो ये जो हो गया ये हमारा CaSO4, ये हमारा एक कंपाउंड मिल गया, ये साल्ट मिल गया, वहां पे Cl2 plus Cl2 गाइस. एंड वी गॉट अनदर टर्म, लेट मी सी आर यू गेटिंग क्लियर. या सब कुछ क्लियर दिख रहा है गाइस? अगर अभी भी कोई नेटवर्क इशू है या इवन इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन what can I say, if you are getting any problem regarding to quality you can go and comment me. If you are having an issue I will try to resolve it guys. So these all terms that we need to study regarding to property. चलो अब यूज के बारे में बात करते हैं. यूज का बहुत ही कम यूज है, लेकिन क्या क्या यूज है ये देख लेंगे, क्योंकि यूज का बेसिकली इसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट गेट यूज्ड व्हेन वी हैव टू डिस्कलर समथिंग. अब डिस्कलर कब कराना है? देखो डिस्कलर करने का भी एक समय आता है, कब आता है मैं डिटेल से आपको बता. So guys finally we are going to discuss the uses regarding to bleaching powder.
So I told you that the uses of bleaching powder is totally similar with the uses of chlorine. Yeah guys, somewhat similar, somewhat different, लेकिन most of the time similar ही है. तो पहला क्लोरीन का यूज आपको याद होगा फॉर क्लोराइडेशन, सो वी कैन राइट हियर फॉर प्यूरिफाइंग water. So we have written over here for purifying water. The next use that we use bleaching, the next purpose for which we use bleaching powder, guys हमेशा याद रखना, for देखो for softening of wool. अब देखो ये बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, ये सॉफ्टनिंग टर्म को ना लिख के आपको बुक में, अगर आप इफ यू आर गोइंग थ्रू द बुक you will see certain more terms, but you have to remember only thing for softening of wool or certain other fabrics that we get from natural fabric or that we get from nature. चलो गाइस थर्ड यूज देख लेते हैं. एक्चुअली देखो इसका मात्र तीन ही यूज है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जो हमारे लिए पढ़ने को जरूरी है. तो देखो गाइस सेकेंड यूज मैंने बताया आपको कि ये यूज किए जाते हैं हमारे, इसलिए मैंने बताया सॉफ्टनिंग ऑफ वूल. अब देखो एक चीज और यहाँ से टर्म क्या आता है गाइस, वेट करो. Yeah guys, so now we are discussing the uses regarding to bleaching powder. तो दो यूज तो हो गया, तीसरा यूज देखो क्या. Even guys, certain time we use this bleaching powder for making CF chlorolipid guys. CFC नहीं समझ लेना, क्लोरोफॉर्म समझो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म. चलो अब एक बात आपके दिमाग में आ रहा है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन क्यों करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग किस लिए यूज करते हैं, वी यूज क्लोरोफॉर्म फॉर गेटिंग समवन, फॉर मेकिंग समवन अनकॉन्शियस. आपको याद है अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, इज सम स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी आर नॉट गेटिंग इन कॉन्शियस स्टेट और वी आर नॉट नोइंग व्हाट इज बीइंग हैपन ओवर इन आवर नेचुरल सराउंडिंग और इन आवर नियर बाय एरिया गाइस. तो ये याद हो गया कि क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है. अब बस इतना ही है ब्लीचिंग पाउडर, और कुछ नहीं. बस देखो हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी टर्म्स मैंने अभी डिस्कस किया, टिल नाउ वी डिस्कस व्हाट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सो मेनी बेकिंग सोडा वी डिस्कस्ड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा वी डिस्कस, ब्लीचिंग पाउडर वी आर डिस्कसिंग हियर. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस, वन अनदर सोडा आई एम गेटिंग मिसिंग दैट, व्हिच वन, या baking soda, washing soda, oh left one another soda we discussed, no, there we discussed, yeah we discussed, there are three sodas we discussed. You have to remember just their chemical composition and their chemical reaction, बस इतना याद रखो. और यूजेस बहुत ही कम देखने को मिलता है. एक्चुअली नेम से ही पता चलता है बेकिंग सोडा का यूज हमारे लिए ईटिंग पर्पस के लिए करते हैं, हमारे केक पेस्ट्रीज में. वॉशिंग सोडा याद है आपको बात करने के लिए. तो ये सभी टर्म्स आपको याद रखने हैं, बस थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि अगर आप डिटेल के ऊपर जाओगे तो हमारा 5 वीडियो पहले ही क्लियर हो चुका है. तो आपको अब नेक्स्ट टर्म जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस आ रहा है, चलो उसे डिस्कस करें. सो गाइस लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी फॉर यू ऑल इज दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस. आई टोल्ड यू प्लास्टर ऑफ पेरिस इज somewhat complicated for you. Why? Because plaster of Paris is having a difficult, or we can say somewhat different composition, or we can say chemical formation. Actually plaster of Paris किसे कहते हैं जानते हो? Plaster of Paris is also known as, or the another name of, or the chemical name of plaster of Paris is, एक बात देखो, आपको पता है कि हमारा वाटर को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं H2O. We are telling water as H2O. What will be the half term of water, बताओ हाफ टर्म वाटर को क्या बोलेंगे. ये देखो अगर ये पता है आपको तो आपको डाउट इसमें सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टर्म्स स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं. एक्चुअली देखो गाइस मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, बता देता हूँ. पहले बताया गाइस आपको पार्ट 1 में, बट आपको याद नहीं होगा. एक्चुअली वाटर का हम लोग केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन गाइस जानते हैं H2 होता है, ठीक है, H2O होता है. अब एक बात हमें याद रखने वाली बात होती है कि H2O का अगर हम लोग हाफ लिख देते हैं H2O अपॉन 1/2, तो इससे क्या बोलेंगे गाइस, इससे हम लोग बोलते हैं हेमीडाइड्रेट. क्या बोलते हैं, हेमीडाइड्रेट. एंड ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि बस यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस या डॉट 1/2 H2O, यही हमारा कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और POP. So guys, we got the chemical formula of plaster of Paris. CaSO4 means calcium sulfate plus 1/2 H2O. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेमीडाइहाइड्रेट. ठीक है गाइस. अब देखो जिप्सम का एक टर्म आता है, व्हाट डू मीन बाय जिप्सम. अब जिप्सम में क्या होता है कि ये जो हमारा हेमी है वहां पे डाई हो जाता है,
डाई का मतलब क्या होता है 2H2O। आपको याद होगा क्लास 9 में देयर आई टोल्ड यू व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन H2O 2H2O, these all terms how they are related, how they are different from each other. So guys wait, so guys finally we are going to see the chemical reaction involved during the formation of plaster of Paris guys। तो चलो ये हमारा इन प्रोसेस होने वाला है, इन सेक्शन होने वाला है guys। तो मैं आपकी जानकारी मैंने पहले बताया कि जिप्सम गाइस, जिप्सम इज अनदर टर्म विच इज डोनेटेड बाय CaSO4 प्लस .2H2। अब देखो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट प्लस डाइहाइड्रेट। आई टोल्ड यू व्हेन दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस और कंपाउंड इज हीटेड on 100 degrees Celsius or we can say 373 Kelvin, we already knew। When here we are applying catalyst, ये catalyst क्या है मैंने आपको पहले बताया कि here we are applying delta as heat and during this type or during this reaction we get the plaster of Paris and another term that we get over there, let me write that। एक्चुअली देखो अब जो मिलेगा उसे मैं लिख लेता हूँ, उसको बाद बैलेंस करें क्या ये क्वेश्चन हमारा बैलेंस्ड है और नो। सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर गाइस, लेट मी राइट फर्स्ट। So we are getting CaSO4 dot 1/2 H2O plus 1/2 H2O। अब देखो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को अब हमें क्या करना है कि चलना है इससे, अब हमें बैलेंस करने के लिए। तो देखते हैं पहले गाइस, ये हमारा CaSO4 चलो सही है, 2 है तो 1/2 चलो सही है। लेकिन गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो हमारा 1/2 H2O लिखा हुआ है ये आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हमारा 100% प्योर मेथड नहीं होता एक्चुअली। जिप्सम सॉरी गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस POP यही मेथड के थ्रू हमें मिलता है। बट गाइस हियर वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज दैट द 1/2 of H2O represents the water molecule or the water content that we get after the crystallization process, but the real process involved in this reaction is certain different regarding to this term। let me write that। देखो अब जब हम लोग जा रहे हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन और वी आर गोइंग टू सी the 100% clarity of the chemical reaction which is performed over here guys। सो देखो एक ही बात हमें चेंजमेंट कर देते हैं और बाकी हमेशा सबका सम सेम रहता है। तो क्या सेम रहता है देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बस इस टर्म को हमें ऐसा कुछ करना है कि ये वाला हाफ H2O चेंज हो जाए 2H2O में। आपको याद होगा कि 2H2O का मतलब होता है टोटल और वी कैन से डायरेक्टली वी आर गेटिंग द परफेक्ट हाइट विदाउट एनी crystallization process। So guys in order to make that we are doing just a simple process that we are multiplying the whole term of gypsum CaSO4। हमेशा याद रखना है आपसे कोई पूछे why we are multiplying here by 2 in order to get that 2H2O। why we are trying to get 2H2O because we have to get the right property or we have to get the right compound of water। तो बस इतना बोल देना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। 2H2O लिख दो। अब देखो गाइस यही सेम हमारा वही रहेगा 100 डिग्री पर, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं या डेल्टा वही हीट प्रोवाइड कर 373 केल्विन जो भी लिखो। अब देखो गाइस जब हम लोग इसका जो रिएक्शन परफॉर्म करें तो यहाँ पे देखेंगे इधर 2 हो गया तो इधर भी बेसिकली 2 होगा CaSO4। अब एक चीज देखने को मिलती है यहाँ पे 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया तो 2 कितने हो गए 4 और यहाँ पे हमें 4 लाना है। तो बस इतना याद रखना है, यहाँ पे हमारा H2O हो गया, ठीक है। अब देखो गाइस ये 2H2O 2 × 2 4 हो गया तो हमारा 2 तो यहाँ पे है, H2 का 2 है 2 4। तो चलो इसे हम लोग क्या लिख देते हैं 2H2O एंड फाइनली हमारा ये कितना बच गया देखो। अब हम लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो बस एक चीज अपना दिमाग से अप्लाई करो कि हम लोग यहाँ पे फिर वही प्रोसेस काउंट करेंगे कि ये दोनों का क्या हमारा इक्वल प्रोपोर्शन है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो बस इसका क्या करो, इसे 2 × 2 को यहाँ पर से वेट करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ H2O रहने दे, ठीक है। क्यों हम लोग ऐसे करेंगे क्योंकि वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन आल्सो, नो फॉर दैट ओनली वी आर डूइंग दैट एंड वी गोट हियर 3H2। अब चलो देखते हैं क्या हमारा ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू काउंट Ca2 2Ca ओके, SO4 SO8 नो प्रॉब्लम, SO4 होल्ड ट्वाइस so we are getting here so here 2H2 means that here 2 okay, all right, 2 × 2 4, here we are taking as 1, 3 we are putting over there। So guys finally we can see we got the proper sequence or the proper method involved during the formation of plaster of Paris guys। अब अगर इसके बाद कुछ बचा है तो क्या बचा है guys, we saw the chemical reaction performed in the formation of plaster of Paris guys। last thing that we are going to see about the properties of what, properties of plaster of Paris। एक बात और, plaster of Paris is used mostly in for the construction process। आपको याद होगा even for making plaster, actually plaster of Paris का most of the time by its name only we can get the use
ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर आपको याद होगा हमारा ये वाला प्लास्टर हो चुका है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर बोलते हैं। तो चलो अब देखते हैं हमारा ये प्रॉपर्टी, देन वी विल सी द लास्ट अबाउट द यूजेस। So guys, at last we are going to see the properties regarding to plaster of Paris। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। So guys, here we can see that properties कौन कौन सा है ये हम लोग देख रहे हैं। Actually guys, I told you already, plaster of Paris by its name only we can guess that plaster of Paris is used for plastering our several damages in our hands, in our legs. I already told you, even for constructing buildings like this plaster. So guys, here I am going to tell you it is a white powder substance. White powder substance. Actually this is not a property, but let me write, no problem. But here you have to write that whenever plaster of Paris is added with water, it gets formed into what? CaSO4 into 2H2O, our gypsum. So guys, gypsum ये जो फॉर्मेशन होता है ये काफी क्विक प्रोसेस होता है, so we can write it gets easily dissolved with water and forms a hard substance। तो गाइस इतना लिख लो, यही इसका प्रॉपर्टी होता है। एक्चुअली गाइस एक चीज और मैं आपको नहीं बताया हूं अभी तक। देखो, जब हम लोग वाटर के साथ CaO हाफ H2O को मिलाते हैं तो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला प्रोसेस या हमारा जिप्सम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जिप्सम होता है गाइस, ये हार्ड लेयर का वर्क करता है। तो भाई इतना तो क्लियर होगा कि हमारे पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन अब लास्ट थिंग जो हमारे लिए बचा है गाइस, यूजेस रिगार्ड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट। सो गाइस एट लास्ट वी आर गोइंग टू सी द यूजेस रिगार्ड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट यूज आई टोल्ड यू फॉर मेकिंग, फॉर प्लास्टरिंग walls, buildings, etc. We can write over here. Second thing I told you, for plastering our body part damaged bones, so we can write that also. For covering damaged bones. Actually guys, the most useful thing for this plaster of Paris is that several compounds like we see our chalks, even so many boards are also made from plaster of Paris guys. So these all terms are uses of plaster of Paris. So guys, these all things that we have to study in class 10 regarding to acid base and salt. But one major term is left, that is hydrated salt. Means that how salt is acted by different modes. So let me tell you that also guys, because I don't like to leave any term for you. So guys, I'm going to deal with that also. So guys, last time also we are going to see about hydrated salt. Actually, what do you mean by hydrated salt? Hydrated salt refers about the salt that we get from different medium or different from nature by the process of crystallization. We already knew that from the natural surroundings, from the seashore, we are getting salt by the process of crystallization. There first we involve the process of evaporation, then we involve the process of what? Do you know? In class 9 only we studied guys, don't waste my time. Simple process there. Finally we get the crystals, first evaporation, then distillation, finally we get the crystals. That's why it involved in hydrated salt. But the basic difference is that the salt which is hydrated is known as anhydrous salt. Suppose I am going to tell you CaSO4 plus 2H2O dot 2H2O. Calcium sulfate 2H2O is available over here in its natural salt form. Where it is converted or when it is heated, during that time when it gets loose the water from its surrounding, at that time or from its nature, at that time we get the anhydrous salt. So we can say here CaSO4 only we will get plus 2H2O, it will get evaporated. So CaSO4 is known as anhydrous salt solution or anhydrous salt. So guys, these all things that we have to study in class 10. Actually, if you are having any more doubts, please go and ask from me, because I always try to give my best in all my videos. I tried my 100%. If you are having more doubts, if you want to concern something to me, please go and concern, because comment box is always open for you all. And one thing I'm going to request from you all, if you are having
any more concern, means you all are not asking any doubt, guys, and even you all are not joining our Telegram channel also. In last video when I requested from you, most of the students joined the Telegram channel, but guys, please go and join the Telegram channel, because most of the social media sites I joined for you all only. Even on Twitter also I'm trying to provide questions. You'd think on Twitter I'm providing certain questions. How is it possible? Because yes, guys, you can join any of our social media group, because all our social media group is based on education only. And if you are having more doubts, go and comment in the comment box section. Thanks for watching this video. Have a nice day to you all. Good luck.